Greetings of the day, everyone. Today we are starting a poem in class 9th, The Lake Isle of Innisfree by W.B. Yeats. This presentation of the poem The Lake Isle of Innisfree is made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Bahadurgarh. The Lake Isle of Innisfree. This poem is written by a famous poet, William Butler Yeats. He was born in 1865 and died in 1939. The Lake Isle of Innisfree. Students, first of all, let us talk about the title. Lake, you already know, झील. Isle is a short form of island. Island क्या होता है बच्चों? ऐसा भूमि का भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो. So Lake Island of Innisfree. Innisfree is a place. Actually, this is an island near Sligo, Ireland. This poet W.B. Yeats belonged to Ireland. Ireland is near England. And right now, when he was writing this poem, The Lake Isle of Innisfree, in the year 1890, he was in London, the capital of England. The picture that you are seeing on your screens is the actual picture of the Lake Isle of Innisfree. You can easily find out how peaceful, how calm, and how tranquil it is. In this poem, the poet describes his intense desire to escape from London to the Lake of Ireland of Innisfree. Actually, he is deeply depressed by the hustle and bustle of London life, the busy life of London. बच्चों, जो हमारा कवि है W.B. Yeats, वो काफ़ी दुखी है बिजी लाइफ को जीकर लंदन की, और वो चला जाना चाहता है लेक आइल ऑफ इनीसफ्री के अंदर एक शांति भरी पीसफुल जिंदगी बिताने के लिए. सो दिस पोएम शोज हिज डीप डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम लंदन टू द लेक आइलैंड ऑफ इनीसफ्री. This well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. This poem is a lyric. This is a quite short poem. First of all, let us read the poem. I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin built there, of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for honeybee, and live alone in the bee-loud glade. And I shall have some peace there, for peace comes drooping slow, drooping from the vales of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer, and a noon a purple glow, and evenings full of linnets' wings. I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's grey. I hear it in the deep heart's core. By William Butler Yeats. So this is a full reading of the poem. Now let us start with stanza 1. I will arise and go now. The poet W.B. Yeats is quite fed up of the city life of London. He is quite depressed from the hustle and bustle of London. So he wants to get up and go to the island of Innisfree. बच्चों, जो कवि है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है लंदन की बिजी लाइफ को जीते हुए, इसलिए वो उठकर जाना चाहता है, लंदन को छोड़ देना चाहता है, लंदन की बिजी लाइफ से दूर जाना चाहता है, और वो जाना चाहता है आइलैंड में, स्लाइगो के नज़दीक एक आइलैंड में जिसका नाम है इनीसफ्री. एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड. ही वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्मॉल कैबिन देयर. बच्चों, वो अपनी छोटी सी कैबिन, तुम पिक्चर में भी देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड अ कैबिन, एक कैबिन बनाना चाहता है क्ले मड यानी कि मिट्टी से, एंड वेटल्स स्टिक्स से. स्टिक्स मीन्स जो पेड़ों की टहनियाँ होती हैं बच्चों, उसका यूज़ करके. तुम देख सकते हो ऐसा ही कुछ कैबिन पिक्चर में भी बना रखा है. 9 bean rows will I have there. He wants to have 9 rows of beans. वो वहाँ पर 9 पंक्तियाँ उगाना चाहता है सेम की फलियों की.
एंड अ हाइव फॉर द हनी बी। और बच्चों वो वहाँ पर मधुमक्खियों का एक छत्ता लगाना चाहता है ताकि उससे वहाँ पर उसे हनी शहद प्राप्त हो सके। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, एंड ही वॉन्ट्स टू लिव अलोन देयर, वो वहाँ पर बिल्कुल अकेला रहना चाहता है। द पर्टिकुलर प्लेस विच इज़ फिल्ड विद द साउंड ऑफ बीज, उस जगह पर जो कि केवल और केवल वो हो और उसकी हनी बीज की आवाज़ हो। ग्लेड, ग्लेड मीन ओपन स्पेस इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर एक ओपन स्पेस के अंदर वो अकेला रहना चाहता है। सो दिस वॉज द स्टेंजा 1। इन दिस स्टेंजा द पोइट वॉन्ट्स टू leave London life and wants to go to Innisfree, an island. He wants to build a small cabin there of clay and wattles. He wants to have 9 beans rows. He wants to have a hive for honeybee, and he wants to live alone there. Now we are moving towards stanza 2. And I shall have some peace there, for peace comes drooping slow. मैं वहाँ पर अकेला रहना चाहता हूँ। द पोइट इज सेइंग दैट ही वॉन्ट्स टू हैव पीस, ही वॉन्ट्स टू हैव ट्रैंक्विलिटी, ही वॉन्ट्स टू हैव क्वाइटनेस, कामनेस, शांति की प्राप्ति के लिए वो वहाँ पर जाना चाहता है। एंड ही नोज दिस फैक्ट वेरी वेल दैट पीस कम्स ड्रूपिंग स्लो, ड्रूपिंग मीन्स कमिंग डाउन, पीस कम्स स्लोली स्लोली, शांति धीरे धीरे ही मिलती है, अचानक से या एकदम से नहीं मिलती। ही नोज दिस फैक्ट वेरी वेल। ड्रूपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, अब उसे बच्चों शांति कैसे मिलेगी? सो ही इज गिविंग सम एग्जाम्पल्स। द पीस विल कम फ्रॉम वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, वेल्स मीन्स घूंघट, सुबह का घूंघट। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इट मीन्स अर्ली मॉर्निंग मिस्ट, मिस्ट मतलब धुंध, इन विच थिंग्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। तो सुबह सुबह की धुंध के अंदर जब कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं देता, ऐसा लगे जैसे मॉर्निंग ने घूंघट ओढ़ लिया हो, वहाँ पर उसे शांति मिलेगी। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, नाउ लुक एट द क्रिकेट, ये झिंगुर होता है बच्चों एक तरह का, वहाँ पर झिंगुरों के गाने की, क्रिकेट्स के गाने की आवाज़ आएगी। ओनली देन ही कैन हैव पीस। देयर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लिमर, मिड नाइट यानी कि आधी रात को वहाँ पर ग्लिमर, ग्लिमर मीन्स रोशनी, टिमटिमाहट होगी स्टार्स की। द नाइट्स, द मिड नाइट्स, आधी रात, विल बी फुल ऑफ ब्राइटनेस ऑफ द स्टार्स, ग्लिमरिंग शाइनिंग स्टार्स। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर में वहाँ पर बैंगनी रंग का प्रकाश होगा। बैंगनी रंग का प्रकाश मीन्स सूर्य का प्रकाश जो वृक्षों के पत्तियों से छन कर निकलता हो, कुछ पर्पल कलर का हो जाता हो, ठीक है, तो इस प्रकार का प्रकाश दोपहर में उसे प्राप्त होगा। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और शाम को वहाँ पर बहुत सारे लिनेट, लिनेट बच्चों पिक्चर में देखिए, लिनेट इज़ अ स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विद अ शॉर्ट बीक। एक बच्चों एक तरह की स्पैरो ही होती है, छोटी सी, इसे सिंगिंग बर्ड भी कहा जाता है, ये बहुत अच्छा गाना गाती है। तो ये वहाँ पर बहुत सारी लिनेट्स वहाँ पर आ जाएंगी और अपने पंखों को फैलाकर वहाँ पर घूमेगी। ओनली देन द पोइट कैन हैव पीस, पीस ऑफ माइंड। Now we are moving towards stanza 3rd and the final stanza of this poem. I will arise and go now, for always night and day. I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. I will arise and go now. The poet wants to get up and go now to the lake island of Innisfree. For always night and day, all the time, continuously, he wants to live there in the lake island of Innisfree. I hear the lake. अब कवि कह रहा है मुझे अभी झील की आवाज़ सुनाई दे रही है। झील की मीन्स वाटर की आवाज़ बच्चों। लैपिंग, लैपिंग मीन्स द साउंड ऑफ वाटर बीटिंग अगेंस्ट द शोर। आपने सुना भी होगा किसी नदी, झील या समुद्र के पास अगर आप गए हो, जैसे ही पानी शोर यानी कि किनारे के साथ टकराता है तो आवाज़ होती है। सो द पोइट इज सेइंग आई एम हियरिंग दैट पर्टिकुलर वॉइस ऑफ द साउंड, particular sound of the lake water, sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavements grey. बच्चों, in reality the poet is standing on the roadway, roadway means street, और pavement, pavement होता है बच्चों फुटपाथ, grey means dull, boring, sad। तो पोइट इस समय लंदन के पेवमेंट पर, फुटपाथ पर एक गली के अंदर खड़ा है। यू कैन लुक एट द पिक्चर, और वहाँ पर वो सोच रहा है उस ट्रैंक्विलिटी के बारे में, उस शांति के बारे में, उस पीस के बारे में जो उसे शायद मिल जाएगी आफ्टर गोइंग टू द लेक आइलैंड ऑफ इनीसफ्री। बट राइट नाउ ही इज स्टैंडिंग इन अ स्ट्रीट ऑन अ सैड
dull city footpath. I hear it in the deep heart score, and the poet is saying, I hear the linnet singing, the cricket singing, the tranquility, the peacefulness, the calmness, all these things he can feel in his heart. The innermost corner of his heart can feel all these peaceful things. दिल में उसके वही चल रहा है, वो उसी बारे में सोच रहा है, उसी शांति के बारे में, उसी ट्रैंक्विलिटी के बारे में, उसी पीस के बारे में जो उसे लेक आइलैंड ऑफ इनीस्फ्री पर जाने पर मिलेगी. बट राइट नाउ ही इज स्टैंडिंग एट अ पेमेंट ऑफ लंदन. लेकिन अभी वो लंदन के एक फुटपाथ पर खड़ा है और सोच रहा है अबाउट द लेक आइल ऑफ इनीस्फ्री. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज आवर पोएम. Hope you have liked the video. Do like, subscribe and share my channel for more such videos. Thank you for watching. Take care.